Suprabhat. Good morning, everyone. Myself, Ramachandra Lohani, basketball coach, Bharati International School, Ruddupur. So, guys, today we are going to start our morning session, yoga and physical activity. In this session, we will do some mild stretching. After that, warming up exercises, then our daily yogic pranayam activity. So, guys, are you ready? Okay, let's come start. First, mild stretching. So, guys, raise your hand just like and close your finger or slightly upward and total body weight on your toes and slightly bend in a relaxed manner. And wait for 8 to 10 seconds. Then come back and relax. Both hand forward and spread your finger. Just scratch your finger just like 1, 2, 3, 4, 5. Then relax and rotate your wrist like this 1, 2, 3, 4, 5. Then reverse 1, 2, 3, 4, and 5. Then relax. Raise your hand. One hand fold and press first left side and wait for 8 to 10 seconds. Then change your hand and stretch your shoulder right side and wait for 8 to 10 seconds. Then relax. Both hand forward and cross your hand just like first left side and stretch your shoulder and wait for 8 to 10 seconds. Then change your hand just like then relax. Neck up and down just like down, up, down, up, down, up, down, up, down. Then relax and sideways just like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now relax.
Press your knee like this and wait for 8 to 10 seconds. Then relax and change your leg like this. Now relax. And back stretch like this. Press your toe. Then change your leg. And wait for 8 to 10 seconds. Then relax. Right leg forward. Your toe is upward and slightly bend and slightly press your leg like this. And change your leg. And wait for 8 to 10 seconds. Then relax. Now we are going to start our warm-up exercises. So first, start with walking 2-3 steps forward and 2-3 steps backward. Now start with jogging and swing your hand. Swing your hand and extend your leg. Now start the running. Relax. Our first exercise, jumping jacks. Jumping jacks, first the demo, just like 1, 2, 3. Your leg should be spread, your hand just like touch your finger, just like. So guys, are you ready? Okay, now start with counting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Now relax. Our next exercise, jumping jacks with 4 count. First, demo, like 1, your hand position, your leg position like this. Your leg should be spread out. Your hand position, parallel to your shoulder, just like 1,
2, split your leg, your hand position, just like 2, 3, then come back in the parallel position, 3, then 4, change your leg, your hand position, your leg position like this, 4. So guys, अब हम इसे कंटिन्यू रिदम में करेंगे. Are you ready? Okay. Now start. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Now relax. Our next exercise, sumo squat. Your hand position like this, your leg position like this. Now start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Now relax. Our next exercise, twist your body and sideways. Just like your leg position, your hand position like this. First, just like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Same exercise. And change the position like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20. Now relax. Our next exercise, high knee crunches. Your hand position like this. First demo, just like first right side, just like one, your right leg, and try to touch your left elbow in your knee, just like 1, 2. So guys, अब इसे हम कंटिन्यू रिदम करेंगे, जस्ट लाइक योर हैंड पोजिशन लाइक दिस. नाउ स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Now relax. Our next exercise, high knee march. Your hand position like this. Now start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Now relax. Our next exercise, alternate toe touch. Just like spread your leg, your hand position like this. Now start. 1, come back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Now relax. The spread your leg like this, slightly bend, like 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Now relax. Our next exercise, mountain climb. Your hand position like this. First, your left leg is forward and your face upward like this. 1, then change your position. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Now relax. Some exercise in sitting position. Just lay down like this and your hand position like this. The leg up and down like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 30. Now relax. Next, both legs up and down. Just like 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Now relax. It's like relax manner. Change the position like this. Slide upward and wait for 20 seconds. Then come back. Or next exercise, our daily yogic pranayam activity. So guys, first sit on mat posture, just like a Saralasana. Your hand position like this, just Gyan Mudra. Your back, neck should be straight. फर्स्ट हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जिसमें पूरक और रेचक क्रिया का अभ्यास होता है। पूरक का तात्पर्य होता है सांस को अंदर की ओर ले जाना, रेचक का तात्पर्य होता है सांस को बाहर की ओर छोड़ना। हम इसे 3 प्रकार से करेंगे। प्रथम सरल गति, द्वितीय मध्यम गति, तृतीय से हम तीव्र गति से करेंगे। पर विशेष ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या हार्ट से संबंधित रोगी हैं, वो इसे तीव्र गति से ना ही करें तो उनके लिए अच्छा होगा। अगर करते हैं तो उसे सरल गति से कर सकते हैं। प्रथम सरल गति से
लंबी गहरी सांस लेते हुए दित्य मध्यम गति से लंबी गहरी सांस लेते हुए तीव्र गति से लंबी गहरी सांस लेते हुए अगला अभ्यास हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जिसे हम स्टॉक के माध्यम से सांस को बाहर की ओर धकेलते हैं। इसे हम प्रथम 40 के स्ट्रोक्स में करेंगे, द्वितीय हम इसे 50 के स्ट्रोक्स में करेंगे, तृतीय हम इसे 60 के स्ट्रोक्स में करेंगे। प्रथम 40 के स्ट्रोक्स में योर बैक नेक शुड बी स्ट्रेट, योर हैंड पोजिशन लाइक दिस। देखते 50 के स्ट्रोक्स में तृतीय 60 के स्ट्रोक्स में लंबी गहरी सांस लेते हुए अगला अभ्यास हम अनुलोम विलोम का करेंगे, जिसमें पूर्वक और रेचक क्रिया का अभ्यास होता है। प्रथम हम राइट नोस्ट्रल से सांस को अंदर की ओर ले जाएंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को बाहर की ओर छोड़ेंगे। ठीक इसी प्रकार लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को अंदर की ओर ले जाएंगे
और राइट नोस्ट्रल से सांस को बाहर की ओर छोड़ेंगे। इस प्रकार हमारा एक चक्र पूर्ण होगा। हम इसे 10 चक्रों के माध्यम से करेंगे। योर बैक नेक शुड बी स्ट्रेट, स्लाइटली क्लोज योर आइज, योर हैंड पोजिशन लाइक दिस। इस प्रकार हमारा एक चक्र पूर्ण हुआ। लंबी गहरी सांस लेते हुए अगला अभ्यास हम ब्राह्मिक प्राणायाम का करेंगे। जो बैक नेक शुड बी स्ट्रेट। जिस प्रकार बौरा मुंह का उच्चारण करता है, ठीक उसी प्रकार भौरा रूपी हम आवाज को निकालेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए स्लाइटली क्लोज योर आइज, योर एयर। जिस प्रकार भौरा मुंह का उच्चारण करता है, ठीक उसी प्रकार भौरा रूपी आवाज को हम निकालते हैं। लंबी गहरी सांस लेते हुए अगला अभ्यास हम ओम का उच्चारण करेंगे। योर बैक नेक शुड बी स्ट्रेट, योर आइज स्लाइटली क्लोज। लंबी गहरी सांस लेते हुए ओ
Slightly rub your hand and try to touch your face, your biceps, your thighs, and then again rub your hand and your face muscles and slightly open your eyes with gentle smile. Thank you all of you. Have a good day.